what is the agreement problem, what is the system model which we consider to solve agreement problem, what is the different criteria, what are the different classifications which goes with the agreement problem. So we had seen there are three different classifications. First is Byzantine, and second one is consensus, and third one is the interactive consistency. Okay, then we have also seen what is the solution of Byzantine agreement problem. So we had seen one impossibility result. What was the impossibility result? That if there are the three processors, then there is no scope of being anyone as a faulty. क्योंकि हमने जो लॉ पढ़ा था कि फॉल्टी प्रोसेसर मैक्सिमम हो सकते हैं फ्लोर ऑफ n-1/3, एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तीन प्रोसेसर्स ही हैं तो जीरो ही हमारी वैल्यू आएगी, एंड उसके हिसाब से ये क्योंकि जीरो है इसका मतलब है दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी प्रोसेसर फॉल्टी हो. नाउ इन टुडेज क्लास वी वुड सी some of the very good applications of agreement problem, and हमने क्योंकि सॉल्यूशन देखा था लास्ट टर्म पे, और वो सॉल्यूशन था बाइजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम का, और उसका नाम था लैम्बोर्ट-शोस्टैक पीस. ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हम कुछ अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे ये बाइजेंटाइन एग्रीमेंट एल्गोरिथम है जो सॉल्यूशन है, क्या वो हम अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स सी. So we have understood कि what are the different applications जहाँ पे कि हम agreement algorithm को apply कर सकते हैं. तो from the day one, जब से हम distributed system पढ़ रहे हैं, उस दिन से we have clearly mentioned that the two major challenges of distributed system are that we don't have any shared memory, and another one, and the second one is that we don't have any physical clock, or we don't have any global clock, right? So because the applications and the sites and the different executors are geolocated in a different sites, right? And they are not being synchronized on a single global clock. That's why we have different solutions named like Lamport logical clock, vector clock, right? So that on the basis of these happen before relations, we can actually go with the synchronization, right? So how we can go with the synchronization using this agreement problem? So first application is the clock synchronization. So clock synchronization में क्या हो सकता है? Clock synchronization में just suppose that we are having three sites. Okay? Suppose we are having three sites P1, and I am assuming these are the remote sites. Okay. So and these are the different events E11, E12, E21, E31, E32, E33, and these are the different events which are on these sites, right? So when these are the different events on the different sites, so we can consider each event as a individual or individual processor, or we can consider each site as a individual processor. So whenever there is a T0 movement, right, we can say that either of the arbitrary processor can initialize its value. Okay? Either of the arbitrary processor can initialize its value, and using Byzantine agreement solution, using Byzantine algorithm, ultimately all of the processor can reach to that final value, and this can be done recursively after every interval, that arbitrarily either of the processor would be, either of the site would be initializing its value, and after running this Byzantine agreement problem, those values would be synchronized
to all, right? Everybody would come on that same page that we have to agree on this value, right? So this is the first use of Byzantine agreement issue, Byzantine agreement algorithm, that you can do the clock synchronization, right? So let's see the second application, that is atomic commit in the distributed databases. So distributed databases हमें पता है क्या होते हैं, a database which are located at a multiple locations, right? Some of the replication, some of the system dependent, some of the fault tolerance features. So a database which is being located at a multiple location is called distributed database, right? So just suppose if a query is getting executed on distributed database, so it means कि जो multiple locations पे फाइल है, database फाइल्स है, वो सारी की सारी इफेक्ट हो रही हैं. So हमें पता है database में commit क्या होता है. Commit का मतलब है कि जो query execute हो रही थी, वो query successfully commit हो गई है, and उसके query जो change करना चाह रही थी, जो modification थे, वो finally reflect होने जा रहे हैं, right? So this all is meant to be commit. But when we are working with a distributed database, इसका मतलब है कि अभी जो operations हैं वो different locations पे हो रहे हैं, right? So different locations पे जब वो हो रहे हैं, इसका मतलब है before reaching or before declaring that there is a commit, there must be some mechanism जिससे कि ये पता चल पाए कि सारे के सारे लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया है, right? That there is a commit, right? So if we have multiple locations like database locations D1, D2, D3, D4, right? And इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, कमिट और नॉन कमिट. मान लो D1 पे कंपोनेंट पे कुछ क्वेरी हो रही है एग्जीक्यूट, और D1 ने वो अपना काम खत्म कर लिया. ना वो वैल्यू इनिशियलाइज करेगा विद द कमिट, ठीक है, वो भेजेगा कमिट. ना सारे के सारे प्रोसेसर्स, सारी की सारी साइट जहाँ पे कि वो उस क्वेरी का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर ये खत्म कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है दिस वुड आल्सो गो विद द कमिट, राइट? इसने भी खत्म कर लिया तो दिस वुड आल्सो गो विद द कमिट. सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन एक्चुअली रिजेम्बलेंस द सॉल्यूशन ऑफ आर एग्रीमेंट प्रॉब्लम, राइट? सो अगर सारे के सारे लोगों से ये आ जाता है मेजॉरिटी कि सब कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग कमिट करना चाह रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है जिसने इनिशियलाइज किया था उसको ये पता चलेगा कि क्योंकि अब सब लोग कमिट करना चाह रहे हैं, तो जब सब कमिट करना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि सबको जो काम मिला था क्वेरी सॉल्व करने का, दैट क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एंड जो चेंजेस थे दो चेंजेस कैन बी मेड परमानेंट, राइट? दो चेंजेस कैन बी रिफ्लेक्टेड. सो दैट्स व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हमारा एटॉमिक कमिट है दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग Byzantine agreement algorithm, right? Thank you.